फास्ट चलना है, जल्दी से चलना है या तो दौड़ना है, तो वो नहीं कर पाता है क्योंकि वो मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो मूवमेंट स्लो हो जाती है स्टिफनेस की वजह से भी। ओके, ओके, ओके। ये सिम्पटम्स रियोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी आते हैं? सो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स, सो स्टिफनेस दैट ऑफ दीज आर रिलेटेड टू जॉइंट्स, ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन आर्थराइटिस। ओके। सो जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स की वजह से, जॉइंट्स में स्वेलिंग की वजह से और जॉइंट्स में जो डीजनरेशन हो रहा है हुँ, हुँ, इंफ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से, हुँ, उसकी हुँ। वजह से जॉइंट में स्टिफनेस आती है, जॉइंट में पेन होता है। सो ओके, पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, ओके। In Parkinson's, basically what we are talking about is the stiffness which is caused by stiffness in the muscles, not in joints. Okay, so there is a difference. So there is a difference. Rheumatoid arthritis में there is stiffness in Hmm. joints. In Parkinson's, there is stiffness in muscles. So I'm happy, I'm glad that you brought out this point because we see quite frequently, quite commonly Mhm. that many a times patients are misdiagnosed to have knee problems and they get their knees Replaced. replaced many a Oh times. my It God. happens. And Okay. later on, after knee replacement also, there is no improvement in symptoms. Okay. Then they seek the help from the neurologist, neurosurgeons. Then they come to know that the problem is different. Not exactly, the problem was not in the knee. The problem was with the muscles, or problem was it was related to Parkinson's actually. So people who have knee problems can also have Parkinson's, or could also be developing Parkinson's. Maybe. Okay, okay.